leave you with today? What is the motive of why you're here today? It's very important for you and me to be aware of this and to ask ourselves this question. Very, very important. The next question, that I want to pose to you, ताकि आपका दिन जो start हो कुछ questions के ऊपर हो, is this the intention with which you are here for this competition, or have you just followed everybody else and jumped on the bandwagon? क्या दोस्तों ने कहा यार आ जाओ कर लें, ये हो रहा है इवेंट, हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर ये आपकी अपनी चॉइस थी? Are you wasting time, or are you really investing it in this particular case, your coding skills? I have hired coders since at least 14 years now. I've been hiring coders. पाकिस्तान में बहुत coders मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं है. या high quality coders कम होंगे, लेकिन coders मिल जाते हैं आपको. Coding definitely, I agree, is a highly investable skill. I agree. The internet as we know it will change radically in the next decade with the advent of technologies like blockchain. Blockchain आ गई, Bitcoin बहुत established हो गया. The concept of owning your internet, decentralized internet, and the applications are going to catch momentum in the next few months, quarters. You'll see this going in a new direction completely. आप डैप्स के ऊपर आ जाएंगे, आ रहे हैं, आपको मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा जिस पे 2 साल पहले काम नहीं होता था. This means that the coding landscape is going to be wide open once again for an entire network to be built. पूरी की पूरी नई revolution आ रही है. Just like in the 90s, dial-up internet आया था. हमारे लिए dial-up internet was a big perk. तो जब dial-up internet अच्छा चलता था, तो you should definitely, I must tell you that वो एक बड़ी interesting सी phenomena होती थी कि जब आप तार लगाते थे, बाद में वो बजता था, टी टी करके आवाज आया करती थी, और फिर वो आइकॉन आता था कहता यू आर कनेक्टेड. और अगर बाहर थोड़ी सी भी हवा चल जाए या बारिश हो जाए तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा. क्योंकि सारी बात है, इतनी लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर थी. वो उस जमाना भी था 90s का. बट जस्ट लाइक वी सॉ in the 90s की dial-up internet आई and changed the fate of Pakistan. Similarly, Web 3.0 is a revolution now on its own. So आज की बात करें, we have to talk about Web 3.0. So use your coding grounds, your coding skills to build the focus, the grit, and the attention to get something done in a limited amount of time. Don't make it an activity that's just going to make you a coder. Use your coding skills to become people who value time, to become people who adapt to the right things, to become people who are nurturing their focus, their ability to reflect, their ability to perform under pressure. Use it as that means, because coding you may not do all your life. IEEE, you have joined today, you will not be part of it all your life. But what you will take back from this event are certain skills that will remain part of your entire system, that would become your brand, that would define you. If as a coder, your timing is not improving, the pace with which you solve a problem or fix a bug or something like that, and the amount of errors you make while writing that code are not reducing over the coming months, you're clearly not progressing in the right direction. But ये coding है. मैं यहाँ पे आपको coding and computer science के ऊपर lecture नहीं दूंगा. उसके लिए बहुत लोग होंगे. मैं चाहता हूँ कि आप अपने इसी coding और अपने इन्हीं skills के through आप ऐसी traits अपने system में ले आएं, अपनी personalities में ले आएं, जिसकी वजह से आप लोग कामयाब हो सकें in the biggest scheme of things. Which brings me to the next question. The next question is, what is this intent and why is it important? Intent क्या होती है? मैं बात बार कर रहा हूँ कि आप अपनी कोई elements लेके आएं, अपने अंदर कुछ traits develop करें, इस coding के जरिए and all that. Those are all of those traits that you can't touch. They're intangibles. They're traits like
passion, they're traits like motivation, they're traits like fighting for a purpose, creating a purpose. इंटेंशन का मतलब, नियत का मतलब ये होता है। नियत का मतलब कोई अननोन चीज नहीं है। नियत का मतलब नियत बहुत मेजरेबल चीज है, इंटेंजिबल है, हाथ नहीं लगा सकते आप, लेकिन अपने काम के जरिए दिखा जरूर सकते हैं। तो अगला मेरा सवाल ये होगा कि इंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इस इवेंट पे आने की, इस पे कम्पीट करने की, या फिर इससे आगे जाकर के इम्तिहान देने की, या उसके बाद नौकरी लेने की। इंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? एफर्ट तो करते ही हो, एफर्ट कर रहे हो तो सुबह उठ के आके यहाँ बैठे हो मुझे सुन रहे हो, पर इंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज दैट डिफाइनिंग फैक्टर। एक इंसान की जिंदगी का डिफाइनिंग फैक्टर उसकी नीयत होती है। But let's understand this. Let's understand what it is and how we can shape it. आज मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसके ऊपर ताकि मे भी आपको फायदा हो जाए। You know, given on your motivation of why you are here today, you will tune your mind such. अगर अपना why ढूंढ लोगे तो अपना माइंड उस हिसाब से नर्चर कर लोगे, घुमा लोगे अपने आप को, अपनी थॉट्स को उस तरह से एक जगह पे ले आओगे। If you are here to compete, you will constantly evaluate yourself and your opponent. इंटेंशन compete करने की है तो आप देखोगे मैं कैसे जा रहा हूँ, बाकी कैसे जा रहे हैं, आप कंपेयर करोगे, compete करोगे। If you're here because you have never competed before, then you will learn how to push yourself to do more. एक और नियत है कि मैंने पहले कभी compete नहीं किया था, मैं आज पहली बार compete करने आ रहा हूँ, so I'm going to push myself, I'm going to see मेरी limits कितनी है। But my friends, if you're here to have fun, then you are not just being unfair to yourself, but to all of those around you as well. You're taking the bar lower down where it should be. You know, wherever you go in life, raise the bar. Raise the bar. That's how special people work. That's how great people work. They raise the bar wherever they are. It does not matter how young you are or how old you are. It's how you look at life. So if you're here, know the intention why you're here. An unclear intent will take away from the experience and not contribute to it. बल्कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था, तुम्हारा जो वक्त तुम लगाओगे 2 दिन यहाँ पे, बजाय कि एक इंटेंशन, एक नियत उससे आपको कुछ सिखाए, आप उल्टा नुकसान करके जाएंगे अपना। You lose more. You lose more focus. You lose more passion to achieve things in life. तो बिल्कुल उलट हो जाएगा। इसलिए नियत का जो रोल है वो बहुत जरूरी है। Now, the next question I'll ask you, and I'll try and answer that alongside you, बाद में इसके जवाब खुद बनाइएगा, is how do you make the intent, the niyat, your X factor? अपना X factor create करना है, तो वो नियत कैसे हो सकती है? वो आपका कॉन्शियस कैसे हो सकता है? You know, the book I wrote, जिसकी अभी उन्होंने मार्केटिंग की कि जी डिस्काउंट पे मिल रही है, वो आपकी मर्जी है, आप किताब लें ना लें, that's not important, but गोल ये है कि उस किताब के जरिए I talk about an equation, एक मैथमेटिकल इक्वेशन। मैंने इम्पैक्ट की इक्वेशन बनाई है उसके अंदर। इसके ऊपर मैं कहता हूं कि एफर्ट कोशिश, रेस टू द पावर इंटेंशन इज इम्पैक्ट। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बस मेरी बात खत्म होने वाली है, इसके बाद गौर से सुन लीजिएगा। दिस मे बी द की टेक अवे फॉर यू फ्रॉम टुडे, एंड दिस for people like myself who've done reasonably all right in their lives, and people better than me who've done much better in life. जब उनकी जिंदगियों को तोड़ के देखा तो पता यही चला कि उनका भी इम्पैक्ट का फॉर्मूला यही था, एफर्ट रेस टू द पावर इंटेंशन। एफर्ट क्या है? जो वक्त आप लगाते हैं, जो मश्क आप करते हैं, जो कोशिश आप करते हैं, जो पैसा आप लगाते हैं, ये एफर्ट है। इंटेंट क्या है? किस तरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, नियत क्या है? उस नियत का दारोमदार आपकी कॉन्शियस के साथ एसोसिएटेड है, आपके जमीर के साथ एसोसिएटेड है। लोग दुनिया में गलत काम भी बहुत करते हैं, तो अगर उनकी नियत सही नहीं होगी तो वो गलत काम उन्हें कामयाबी तो नहीं देगा, हो नहीं सकता। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन पे, गलत नियत पे। सो अगर इम्पैक्ट करना है दुनिया को,
इम्पैक्ट करना है अपने घर को, इम्पैक्ट करना है अपनी सोसाइटी को, अपने मोहल्ले को, अपने मुल्क को, तो फॉर्मूला एक ही है, एफर्ट करो और एफर्ट को रेस टू द पार करो इंटेंशन से। जितना बड़ा इंटेंशन का फैक्टर होगा उतना तुम्हारी एफर्ट एक्सपैंड होकर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, दुनिया का तर्ज बदलेगी। अ मैग्निफाइड solidified intent scales the effort multifold. That's what it means. आपकी एफर्ट को मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है आपकी नियत से। Everyone has made an effort today, I'm sure. This team has put together this weekend after, I'm sure, weeks and days of effort. You are all up and alert and listening to me right now on a Saturday morning. I mean, that's also a painful amount of effort. You will be breaking into groups and competing now from here on. You will be completing challenges. You will be given tasks. But that's effort. Of course, that's effort. Good job. You're working towards effort. So if all of us here are making an effort, does this mean we all are leaving behind some impact? Not quite. Does it mean we all are adding value in our lives? Not so much. We all are taking something away from this experience? Not quite. Not quite. इसकी डिसीजन कि आपका इम्पैक्ट कितना होगा, आप कितना एक्सपीरियंस से अवेल करोगे, आप लोगों की जिंदगियों में क्या वैल्यू डालोगे, ये जो फैक्टर है ये इंटेंशन से आता है। The value of this impact, as I said, is completely and directly proportional to the intention you carry to do things. Can this event create an impact in the world right now? Like, दुनिया तब्दील हो जाएगी परसों? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा तो नहीं होगा। But your clarity of intent and effort will definitely pave the way for a future where you will be able to leave your impact on this world. And that's why we live. That's the biggest question of our life that we all must answer. What is going to be my impact? That's all I have to say. Thank you very much. If you have any questions, I'm open to answering any questions, listening to any comments, all here to interact with you if you're interested. Thank you so much, sir. If you have any questions, please, you can write in chat box. जी, कोई सवाल आप लोगों के पास है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं आपको बात बताऊं, आप ज्यादातर लोग जो होंगे वो इंजीनियर टाइप्स होंगे, एस्पायरिंग टू बी इंजीनियर्स। आप इवेंट्स पे आते हो, आप लोगों को टेक्निकल स्किल अच्छी होती है, फायदा होता है। But remember, my friends, technical skill alone won't take you forward. You need interpersonal skills as well. You need human skills as well. You're not robots. You will make robots. You're not robots. So remember to be charming, to know the eloquence of words. अपने अल्फाज को खूबसूरत करो। जहां अपना कोड खूबसूरती से लिखते हो, वहां पे अपने अल्फाज को भी खूबसूरत करो। और साथ ही साथ अपनी सोच को भी खूबसूरत करो। तो फिर जाकर आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है, एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसके आइडियाज में इन्वेस्टमेंट होती है। I think there's a small comment down there saying how do we measure impact, जो मैंने फॉर्मूला आपको मैथमेटिकली बताया, आप लोगों को मैथमेटिक्स रेजोनेट करती ज्यादा। It's effort raised to the power intention. That's how you will calculate your impact. An impact will have impact क्या है? Impact कोई शशका नहीं है।
Keep that in mind. Make that a thing to remember. कि impact कोई शशका नहीं है. Impact हमारी जिम्मेदारी है. हमें दुनिया में किसी मकसद से भेजा गया था, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए नहीं, रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए भेजा गया था. और मैं आज की आखिरी बात करूंगा. ठीक है, that's a very good question. I just read that. So I'll just take that question first, which says, can we relate leadership and programming somehow? Of course, Fatma, I think there is a very strong relationship between leadership and programming. You know, when you're coding, when you're programming, you know what you're doing? You're telling your code editor, you're telling your compiler to behave a certain way. You're giving it instructions. And it's supposed to perform the way you want it to perform. You're taking responsibility of how the compiler is going to compile that code. You're taking complete responsibility. Leadership is also about two things: being able to give responsible instructions, being able to take ownership. So while you code, you are in your own little way honing your skills to become a leader one day. You're taking the responsibility of how machines will perform in future. It is all about taking control of things, taking control of your system, of your life. There's another question: what are your tips to do a startup out of an awesome product with literally zero investment? Any tips for seeking investors in Pakistan? This is a question that has been asked to me, I think, so often that now I have a very small answer for this, Hasnain. The shortest and the smallest answer for this is, you don't need investors. A great idea does not need investors. A great idea first needs execution. And for execution to happen, you need to be able to answer two things. Why are you building that product? You'll get that answer through the power of self-reflection. अपने आप से सवाल करो, introspect करो अपने अंदर. Why are you creating that product? If your why is strong enough, it is extremely unlikely that whenever in your life you'd go sit in front of an investor, they would say no. Because the most important question for an investor that they want an answer for is the why behind what you're doing. If your why is strong, if your story is strong, if your ethos that drives you to build what you're building is strong, you've already become very investable. And the second most thing that attracts an investor after the why is your focus. How clearly you're hitting the problem. Are you trying to do too much? Or are you trying to go in one vertical and you want to be the best at it? If your product does that, if your service does that, you're a very investable individual. Your startup will definitely raise money. But here's my quick tip. There's something called bad money. Don't run after bad money. Bad money will sink your startup even before it sees the light of day. पहले खत्म हो जाएगा. Bad money means bad timing, too early. You raise money too early, you'll see a very bad deal happening. Why? Because you'll give up on your equity. आप अपनी कंपनी का स्टेक बहुत जल्दी दे देंगे, because आप पे कंट्रोल में चीजें नहीं है अभी. You don't want to dilute yourself in the first round. You want to take longer for your dilution to happen. You want to keep control. And for that to happen, don't raise money too early. Focus on yourself, focus on your product, focus on the opinion of your customers. It's very, very important to understand the opinion of your customers.
जो आप बना रहे हैं क्या उसको लोगों को उसकी जरूरत भी है? क्या लोग उसके लिए पैसे देंगे? जाए उसको टेस्ट करें, जाए उसका प्रूफ लेके आए पहले। अपने लैब में बैठ के, अपने कंप्यूटर में बैठ के आप दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। अगर कोई उसके लिए पैसे देने को तैयार नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार चीज है, कोई फायदा नहीं है उसका। If your technology is not commercial, it's not commercially viable, it can't convert into a product, you're stuck in a very strange situation. So you want to think about that. That is why market surveys are there. That is why talking to your customers there. That is why the whole concept of design thinking is there. Customer desirability. Remember that term. Customer desirability. Whatever you make, whatever tech you create, remember you're selling it to humans. Do they want it? Do they want to pay for it? That's the big question. And this is also something that investors look for. They see what they're investing in. Is it going to sell? Because as the quote says, sales cures all. Sales is the most important element in everything. There's another question. How do we market our after execution? What about rich copycats who quickly kill competition by introducing competitors or improving their product? The investment is taken out of the equation. Hasnan, I think that's a very fair question and a very fair fear. This person sitting in front of you called Nabeel Qadeer has faced this from rich copycats. When I was a young boy, I created a product and I went to seek advice from people. This is many years ago, जब तस्वीरें black and white होती थी, उस जमाने की बातें कर रहा हूँ। तो मैं कुछ लोगों के पास उनको दिखाने गया कि जी मैंने ये चीज बनाई, आप बड़े हैं मेरे, जरा मुझे गाइड तो करें। वो बड़ों में से एक बड़े ने अगले 3 महीने बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अपने अपने प्लेटफॉर्म से। उनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, वो मुझसे बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश थे। मेरी उम्र उस वक्त 25-26 साल थी, उनकी उम्र शायद उस वक्त 45 साल थी। उन्होंने वो लॉन्च कर दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। वो कामयाब नहीं हुए, वो कामयाब हो नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा तो था उसको बनाने का, लेकिन उनके पास उनका वाई क्लियर नहीं था। उनका वाई ये तो नहीं सोचा ना कि नबील कदीर एक बच्चा मेरे पास आया था, उसने बड़ा अच्छा आइडिया दिखाया, मैंने बना दिया। That's not a why. Ideas happen and succeed only when the why is very strong. And second of all, do you think I did not learn from that experience? I only became a bigger person. I learned. Don't try and answer all your questions through your assumptions. कि मैंने बना लिया तो कोई और कॉपी कर लेगा। अगर आपका आइडिया कॉपी हो सकता है ना, तो वो तो कोई आइडिया कॉपी हो सकता है। आप में से इतने सारे लोग बैठे हुए, मैं भी कहूँ यार ये व्हाट्सएप की एप्लीकेशन तो बना दो जल्दी से मुझे जरा। आई थिंक 3 दिन में बना लोगे। आप में से ज्यादा तेज हो 2 दिन में बना के दे दोगे। But is the WhatsApp application important because of the code? No. It's important because of the user base. The millions and millions of users. ये उसकी वैल्यूएशन है जिसके ऊपर वो खाते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है? Don't get over obsessed by technology. Don't romanticize it too much with it. At the end of the day, you're living in a world of human beings. You need to understand the importance of how that technology is taken by human beings. That angle must be understood. And that is where most engineers go wrong. They over romanticize with their products. Because they're so much in love with technology, they think they will solve every problem through a laptop and a mobile phone. No, my friends, you can't. The power of saying Assalamu alaikum, how are you feeling today, is much stronger than any smart application checking whatever. The human element will never go away. So build that in yourself, build that in your products, and make sure that you are a wholesome individual who understands and controls tech, yet who also understands human beings. If you don't understand human beings, you do not understand your customer. If you don't understand your customer, you'll always keep getting misused. You won't learn. Machines, no matter how smart, don't learn a lot. Humans learn
in a jiffy, in a split second. One mistake you learn, once bitten, twice shy. Machine needs to get a lot of data for machine learning to be processed. They're still not as smart as us. We are still, as humans, the smartest machines on the planet. And I believe for sure that will never change. No matter how smart this world becomes via tech, you can't be a smarter machine than a human being. Any other questions? I think there is no more question. Thank you so much, sir. Thank you very, very much. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आप लोगों का, and all the best to all the participants, and well done, and a big pat on the back to all the organizers. Bless you and take care of yourselves. Thank you so much, sir. Hafiz. The event is about to start. The link for the idea group has been shared. If you have any concerns, तो help desk से please contact में रहेगा. Thank you so much, guys. Best of luck. That's all from our side. अस्सलाम वालेकुम. कोई भी अगर मसले मसाइल हो, although मीटिंग एंड हो गई, ओपनिंग सेरेमनी हैज़ बीन फिनिश्ड. थैंक यू मिस्टर नबील फॉर योर टाइम. और अगर कोई मसले मसाइल हो, प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स ताकि उनको मैं जवाब कर दूँ, जवाब दे दूँ. Yes, you can leave the meeting right now. Programming contest के लिए, because programming contest will happen at around 1 p.m. The link will be shared with you shortly. Has the web guru started? No, it hasn't started yet. Web guru will actually start at around 11 a.m. and the details for web guru will be shared with you a bit earlier than 11 a.m. Like maybe around 10:30 तक आपके पास details आ जाएंगी. When will we get details about AI guru? ओके तो जो AI गुरु है वो हमारा 11:30 स्केड्यूल्ड है. तो AI गुरु की डिटेल्स आपको 11:30 से पहले इंशाल्लाह मिल जाएंगी. डोंट वरी, हम आपके साथ हैं. कोई मसले मसाइल हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस. आवर नंबर्स आर अवेलेबल इन द मॉड्यूल डिटेल्स. हेल्प डेस्क है, उसके बारे में हम आपको डिटेल्स ईमेल भी कर देंगे, बता देंगे. डोंट वरी, जो भी मसले मसाइल होंगे आपके उनको फुली अकोमोडेट किया जाएगा. Achha, so there's a question that I have that if the team has only one female member, तो क्या वो she can code के लिए eligible होगी कि नहीं? तो नहीं होगी. I'm sad to announce that. Problem ये है कि हम लोग actually all female team को ये prize देंगे, ना कि partially female team को. Yes, absolutely. You will get the details through the email that you have provided us via the form. अच्छा, और मैं ये भी बताता चलूं कि मिस्टर नबील कदीर की जो उन्होंने बताया, उनकी जो किताब है द बुक इज अबाउट यू, तो इट्स एक्चुअली अवेलेबल इन द मार्केट एंड आपके लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है. उसके लिए 15% का डिस्काउंट है. अगर हम लोग एक लिंक आप लोगों को एक गूगल फॉर्म लिंक ईमेल कर देंगे, उस फॉर्म लिंक को आप एक्चुअली एक्सेस कीजिएगा. उसके अंदर जो डिटेल्स हम पूछेंगे दैट इज नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस एंड योर होम एड्रेस. तो वो आप काइंडली टाइप कर दीजिएगा ताकि हम ये सारी इंफॉर्मेशन नबील कदीर की टीम को सेंड कर दें, और जो भी पेमेंट होगी, सारी डिटेल्स होंगी, वो आपसे बाद में कलेक्ट कर ली जाएंगी.
ओ आई सी, अच्छा आप कह रही हैं कि आप ही एक्चुअली मेंबर हैं, तो हाँ बिल्कुल, लाइक यू विल बी एलिजिबल फॉर द ऑल फीमेल टीम, नो वरीज अबाउट दैट। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप एक्चुअली दो से ज्यादा या दो लोगों की टीम है, तो या ऑल फीमेल टीम को ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। अगर एक ने, सिर्फ एक पार्टिसिपेंट ने एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए रजिस्टर किया है, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल फीमेल टीम, राइट? और ये जो इनिशिएटिव था, इसको लेने का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि फीमेल कोडर्स की जो तादाद है वो काफ़ी कम है, और ख़ासकर जो हैकाथॉन्स और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर बहुत कम लोग एक्चुअली शो अप करते हैं और रजिस्टर करते हैं। तो शी कैन कोड का जो मकसद और जो उसके पीछे इनिशिएटिव लेने का जो एक्चुअली हमने ऑब्जर्व किया, सोचा, वो यही था कि फीमेल कोडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए, दैट दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, और जो अपना फन है, जो अपना टैलेंट है, जो अपनी कोडिंग एबिलिटी है, उसको शोकेस करे इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, हेल्पडेस्क के बारे में काफ़ी सवालात हैं। वी आर सॉरी अगर लाइक मे बी क्या कहते हैं, सही तरह कन्वे नहीं हुई इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा डिले है कुछ लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से, हम आपको ज़रूर सेंड कर देंगे। बट टिल द हेल्प डेस्क आप एक्चुअली जहां भी इन द कमेंट सेक्शन कोई सवाल पूछ सकते हैं। आई एम कंप्लीटली अवेलेबल हियर।